Good evening. Today is 23rd 13th January 2014. पेपर वन सोल्यूशन करेंगे दिसंबर का जो CBSE नेट का। तो हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है, तो उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर को सॉरी पास जो कॉम्प्रिहेंसिव के पहले हमने कवर किया है। नेक्स्ट हमने जो 43 से 44 से 48 तक हमने सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए रीड फॉलोइंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 44 to 48। देखिए द लिटरेसी, ओके, द लिटरेसी, ओके, disgust for politics, distaste for politics, however, seems to be focused not so much on the largely marquee practices of politics। देखिए द लिटरेरी डिस्टेंस लिटरेरी देखिए डिस्टेंस हुआ था फॉर पॉलिटिक्स के लिए। हाउएवर देखिए सीम्स टू फोकस नॉट सच, फोकस हमने नहीं किया है, नॉट सो मच ऑन द लार्जली मार्की प्रैक्टिस। मार्की प्रैक्टिस में हमने फोकस नहीं किया है ऑन पॉलिटिक्स इट्स इन इटसेल्फ एज ए सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन। एज ए सब्जेक्ट क्या है, लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये पर हमने क्या पर फोकस नहीं किया है, लिटरेरी मार्की प्रैक्टिस में और पॉलिटिक्स का। इट्स सेल्फ एज ए सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन बट रेदर मोर ऑन हाउ इट इज ऑफन डिपिक्टेड। देखिए रेदर हमने क्या, हाउ कैसे वो ऑफन डिपिक्टेड होगा इन लिटरेचर, दैट इज ऑन द वेरी पॉलिटिक्स। देखिए ऑन द वेरी पॉलिटिक्स देखिए ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। ये पॉलिटिकल जो नोवेल ऑफन टर्न्स आउट टू बी नॉट मेरीली, ये पॉलिटिकल नोवेल जो है ऑफन टर्न्स कर रहे हैं आउट टू बी नॉट मेरीली ए नोवेल अबाउट पॉलिटिक्स, बट ए नोवेल विथ ए पॉलिटिक्स विथ ऑफ इट्स ओन, फॉर इट सीक्स नॉट मेरीली टू शो अस हाउ थिंग्स are, but has fairly defined ideas about how things should be। कैसे है things लेकिन कैसे होगा, ओके, वाह, ओके। तो इसी बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हाउ टू फेयरली डिफाइंड आइडियाज को एंड हाउ थिंग्स शुड बी, ओके, एंड प्रिसाइजली व्हाट वन शुड थिंक ऑफ एंड डू इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स। देखिए कौन क्या वन थिंक कर रहा है एंड डू इन ऑर्डर इन टू मेक थिंग्स मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन। ओके, कौन डायरेक्शन में जा रहा है। इन शॉर्ट इट सीक्स टू कन्वर्ट कर रहे हैं एंड एनलिस्ट द रीडर to a particular cause, okay, of ideology। It often is an only to familiar phrase, not literature but propaganda। This is said to violate the very spirit of literature। देखिए वो violate हो रहा है spirit of literature which is broaden our understanding, जो broad हो रहा है understanding of the world and the range of our sympathies, again sympathies, rather than to narrow them down through partisan commitment। As John Keats said, क्या कहा था, we hate poetry that has a palpable design upon us। Again, another reason with politics देखिए does not seem amenable to the highest kind of literacy representation seems to arise from the fact that politics by its very nature is constituted of ideas and ideologies। Okay, if political situations do not lend themselves to happy literary treatment, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन अगर नहीं हुआ है हैप्पी लिटरेरी ट्रीटमेंट, तो पॉलिटिकल जो आइडिया है प्रेजेंट परहैप्स में और एन इवन ग्रेटर जो प्रॉब्लम है इन दिस रिगार्ड वो होगा। ओके, तो लिटरेचर इज द आर्ग्यूड इज अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके, rather than about
rather than about क्या है intellectual abstractions. It deals क्या करते हैं in what is called the felt reality of human flesh or and blood and is safe and severe. Okay, rasa rather than in and life in and lifeless ideas. In an extensive discussion of the matter in her books, Ideas and the Novel, an American novelist Mary McCarthy observed that the ideas are still today felt to be unsightly in the novel, though that was not so in former days. That is, in the 18th and 19th century, her formulation of the precise nature of the incompatibility between ideas and on the one hand and the novel on the other betrays perhaps a divided conscience in the matter of and a sense of dilemma shared by many writers and readers. An idea cannot have loose ends. कोई भी आइडिया लूज नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए. देखिए, आइडिया कैन नॉट लूज हैव लूज एंड्स बट ए नोवेल आई ऑलमोस्ट थिंक needs them. Nevertheless, there is enough in common for the novelist to feel the attraction of ideas while taking up arms against them, most often with weapons of mockery. Question again. The constructs of politics by its nature is क्या है? देखिए पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, political situation, ideas and ideologies, political propaganda, understanding the human nature. The answer क्या है? Political propaganda. Okay. लिटरेचर डील्स विथ किसके साथ डील्स करते हैं? लिटरेचर डील्स विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इन पॉलिटिक्स, एब्स्ट्रक्शन, ड्राई एंड एम्प्टी आइडियाज, फेल्ड रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ये फेल्ड रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में. आंसर डी. द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नोवेलिस्ट में मैककार्थी रिवील्स क्या है? देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है? द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नोवेलिस्ट के मैककार्थी रिवील्स, उन्होंने क्या कहा है? The ancient field ideas of the today's in the novel. The dichotomy is considered concerns on political ideas and novels. The compatibility between ideas and novel, and endless idea between and novels, endless ideas and novel. तो आंसर क्या होगा? B. Dichotomy of concerns on political ideas and novels. Dichotomy of concerns on political ideas and novels. देखिए उन्होंने यही बात कह रहे हैं. डिक्टमी ऑफ कंसर्न्स ऑन पॉलिटिकल आइडियाज एंड नॉवेल्स. तो यहाँ पर ही मेरी मैककार्थी की बात है. तो उन्होंने यहाँ पर बात किया है पॉलिटिकल आइडियाज एंड नॉवेल्स के बारे में उन्होंने बात किया है. तो अब देखिए, ये देखिए आइडियाज एंड नॉवेल्स. ओके ओके. तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहाँ पर? 47. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए पॉलिटिकल नोवेल ऑफन टर्न्स आउट टू बी ए. देखिए पॉलिटिकल जो नोवेल है वो ऑफन टर्न्स आउट कर रहे हैं टू बी ए नोवेल्स विथ इट्स ओन पॉलिटिक्स में. देखिए सी इतना नहीं होगा एक. ओके. तो लिटरेसी डिस्टेस्ट हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए. लिटरेरी प्रेजेंट्स ऑन पॉलिटिक्स. ओके. तो डिपिक्शन ऑफ मार्की प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स. तो क्या होगा? सी. नोवेल्स विथ इट्स ओन पॉलिटिक्स. ए पॉलिटिकल नोवेल रिवील्स क्या है? ए पॉलिटिकल नोवेल रिवील्स रियलिटी ऑफ द थिंग्स, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ द रीडर्स, द स्पिरिट ऑफ लिटरेचर. तो यहाँ पर आंसर देखिए, ए पॉलिटिकल नोवेल रिवील्स बी राइटर्स
परसेप्शन। देखिए ये तो राइटर्स का परसेप्शन ही है ना। देखिए वॉरियर, देखिए वॉरियर इज रिलेटेड टू स्वॉर्ड, कारपेंटर इज रिलेटेड टू सो, फार्मर इज रिलेटेड टू प्लाव, इज इन द सेम वे द अथर इज रिलेटेड टू बुक, नहीं पेन। ओके, ये भी नहीं है, फ्रेम में नहीं है, रीडर भी नहीं है, अदर पेन के साथ रिलेटेड है, वो सिर्फ लिखते हैं ना अदर। ओके, तो इस तरफ बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, गिवन द गिवन below in a diagram the three circles A, B and C, overlapping। देखिए A, B and C overlapping each other, and A circle A represents the class of the honest people, B circle represents the class of the sincere people, C and the circle C represents the class of politicians, P, Q, R, S, U, X, Y represent different regions. Select the code represent the region, okay, indicating the class of honest politics who are not sincere। देखिए सर्कल डी, तो ये पर डायग्राम नहीं है तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए तो आप देख पाएंगे, दिया है आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट पेज में है। देखिए ए मैन ought no marry to value himself for being wiser than a woman. If he owes his advantage to a better education, then he ought to boast of his encourage for beating a man when his hands were tied। देखिए a man ought he marry to value himself for using wis for being wiser than a woman. If he owes his advantage to better education, then he ought to broadest of his coverage for beating a man when his hands were tied। The above passage in an instance is an instance of क्या है, देखिए एनालॉजिकल आर्गुमेंट। एनालॉजिकल आर्गुमेंट ये डिडक्टिव भी नहीं है, हाइपोथेटिकल भी नहीं है, फैक्चुअल भी नहीं है। देखिए ये ए मैन ought no marry to value himself for being wiser to a woman than a woman. If he owes his advantage to a better education, then he ought to boast his courage and beating man when his hands were tied। So answer होगा analogical argument। by with of the following position, the proposition we wise men are hardly afraid of death is contradicted। देखिए by which the following the proposition wise men are hardly afraid of death is contradicted। Some wise men are afraid of death, all wise men are afraid of death, no wise men are afraid of death, and some wise men not afraid of death। The answer will be all wise men are afraid of death। When in a group of propositions one proposition is claimed to follow from the others, कोई भी proposition जो claim कर रहा है कि वो follow कर रहा है others को, claim to follow from the others, okay, so that group of proposition called हमने क्या कहते हैं, an argument कहते हैं। देखिए ये valid argument नहीं है, an explanation नहीं है, an invalid, देखिए an argument है। Namita and Samita are brilliant of studious and studious। देखिए नमिता ब्रिलियंट है एंड स्टूडियस है। अनीता एंड कराबी are obedient and irregular।
Anita and Garabi are obedient and irregular है. बबीता एंड नमिता आर इरेगुलर बट ब्रिलियंट है. देखिए बबीता एंड नमिता जो है इरेगुलर बट ब्रिलियंट है. देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं नमिता और शमिता, ये दोनों ही ब्रिलियंट है, मीन स्टूडियस है. अनिता एंड कविता कराबी और ओबीडियंट है एंड इरेगुलर है. एंड बबीता एंड नमिता जो है आर इरेगुलर एंड ब्रिलियंट है. शमिता एंड कविता आर इरेगुलर एंड ओबीडियंट है. सो हु अमंग द इज आर ब्रिलियंट, ओबीडियंट एंड रेगुलर एंड स्टूडियस है. देखिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है. देखिए समिता, आंसर का समिता. देखिए समिता में देखिए समिता ब्रिलियंट है, स्टूडियस है. बी एंड एस धर लीजिए, ये दोनों हैं. ओके, तो उसके बाद देखिए ये दोनों की गोल कर दीजिए. तो ब्रिलियंट स्टूडियस हो गया. ओके, उसके बाद देखिए रेगुलर एंड स्टूडियस. देखिए तो देखिए रेगुलर है. ओके, समिता, तो समिता रेगुलर है. समिता एंड कविता रेगुलर एंड ओबीडियंट है. रेगुलर एंड ओबीडियंट. देखिए ये हो गया है आंसर. तो समिता. फॉर ए कंट्री, देखिए फॉर ए कंट्री CO2 एमिशन, CO2 एमिशन जो होता है मिलियन मेट्रिक टन फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स में. मिलियन मेट्रिक टन होते हैं वेरियस सेक्टर में. गिवन द फॉलोइंग टेबल, दे दिया है हमें फॉलोइंग टेबल, आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, 50 to 60 केस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन. ओके, 55 जो है. देखिए बाई व्हिच परसेंट, देखिए भाई व्हाट परसेंट टोटल एमिशन ऑफ CO2 हैव इंक्रीज फ्रॉम 2005 to 2009. आंसर देखिए 89.32. ये भी डेटा नहीं है अवेलेबल. तो what is the average annual growth rate of CO2 emission? तो देखिए तो आंसर होगा 12.57%. व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर? तो ये होगा बी 41.18%. in which of the year the contribution percent industry and the total selected CO2 emission was minimum. ओके, 5 आंसर देख लीजिए. मैं बाद में और भी डेटा के पुट करके दिखाएंगे. तो ये अभी नहीं है तो इसीलिए मैंने पुट कर दे रहा हूँ. जस्ट आंसर दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, तो इन विच ईयर द कंट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ इंडस्ट्री टोटल CO2 एमिशन वाज मिनिमम. देखिए आंसर होगा 2005. ओके, तो पहले तो कम ही होगा ना, पहले तो उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, तो अब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया. 59%. देखिए 59 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर ड्यूरिंग 2005 to 2009. देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ CO2 एमिशन जो है पावर सेक्टर से 2005 से 2009. इट इज 60. which sector has recorded maximum growth in CO2 emission during 2005 and 99? देखिए वो होगा एग्रीकल्चर. ठीक है, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन सॉल्व पूरी की पूरी. तो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू फॉर सक्सेस. थैंक यू फॉर लिसनिंग.